write BioSketch. Let's be okay, right? So we will start with the thinking how to write BioSketch. Okay, so can anybody tell me what is a BioSketch? आपको मैंने कुछ इंट्रोडक्शन बताई थी व्हेन आई सेंट यू वर्क. इंट्रोडक्शन वाज टोल्ड टू यू कि बायोस्केच होता क्या है. ओके चलो मैं बताती हूँ आपको बायोस्केच क्या होता है बेटा. इट इज अ शॉर्ट कॉम्पोजिशन एंड बायोस्केच इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन. किसी भी पर्सन की एक डिस्क्रिप्शन होती है जिसका हमें जो प्रोफाइल मतलब उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो हमको दी होती है एंड समटाइम्स दैट इज नोन टू अस. कई चीजें हमें पहले पता होती हैं, कुछ चीजें हमें बताई होती हैं एंड using those hints we frame proper sentences and that is a biosketch. Okay, I tell you one thing more. If you remember in your first and second class आपको my father, my brother, ये family members ये सब आपको करवाए जाते थे and do you remember आपको hints दिए जाते थे. It is similar to that. ये भी वो ही चीज है. नाउ द थिंग इज कि इसको नाम बायोस्केच का हमने दे दिया राइट, क्योंकि इसमें उस पर्सन से रिलेटेड उसकी फैमिली, उसकी एज, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग वो सब उसमें बताया जाता है राइट. तो ये ही बायोस्केच होता है. आज हम क्या करेंगे बायोस्केच वी विल स्टार्ट. यू हैव रेड दैट चैप्टर. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर वेयर दीज टू कैरेक्टर्स आर देयर. राइट इट डाउन. Write it down. Name the chapter where these two characters are there. Okay, yes. It is my elder brother. Okay, very good. It is my, and please, बच्चे, everybody should write. Everybody should write. Don't sit idle. Let it be wrong. Beta, its name is, the name of the chapter is My Elder Brother, not only Elder Brother. Okay. And I hope you remember कि उसमें दो कैरेक्टर्स थे हमारे, मुन्ना एंड भैया राइट. अब सबसे पहले हमने क्या करना है, वी विल स्टार्ट विद मुन्ना बायोस्केच. ओके, सो फॉर दैट यू नीड टू गिव मी सम डिटेल्स. You need to give me some details. You have read the chapter. In a way, that will be revision of your chapter also. So first of all, tell me what is the age of Munna that is mentioned in the chapter. Okay, very good, very good. It is only 9. Will you write only 9 age? For that, what will you write? Only 9. 9 years. Yes, it is 9 years. Okay. So side by side, you can note down these things in your notebook also. If you have your notebook with you, I always tell you to keep your notebooks and books with you. Okay. So age is first point we have. It is age. His age is 9 years. Okay, it is done. Now, in the chapter, they have mentioned that he is studying in some class. Which class is it? That you need to make out. When you read the chapter thoroughly, then you will come to know. Then you will come to know. Okay. Okay. I think he is not in 4th class. He is in 6th class because where they have mentioned ki bhaiya you are 5 years elder to me and 3 classes ahead of me. So it means if we calculate according to that, it is he is in 6th class. Okay. Now, next thing is qualities. When you read the chapter, you must have noted some qualities that Munna had. Qualities, his qualities. I am not talking about his hobbies that we can add. I have just noted down main points. His qualities, beta, you are mentioning playing, drawing, those are his hobbies. Qualities, उसमें क्या खासियत, उसमें कुछ उसके अच्छी चीज थी, उसमें कोई क्वालिटी थी. Okay, naughty. Okay, yes, very good. और सॉरी बेटा, हाँ जी बच्चे, नॉटी सिर्फ नॉटी और खेलने का शौकीन था. तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लेफुल. ओके. और क्या क्वालिटीज हैं उसकी, सोचो.
सोचो सोचो, you are writing the same words which I am telling you. Think about it. What are the other qualities? Was he loving? Did he love his brother? Did he love his brother? Yes or no? Yes, you can say he was. We can't say he was studious kind of person. He was intelligent. We can say intelligent, quick to grasp the things. Okay, that is why he never sat with his books all the time. Okay, so we can say that he was playful, he was naughty, and he was intelligent. Okay, now about his behavior. About his behavior, उसका behavior कैसा था with his brother? हाँ जी बेटा, how was his behavior towards his brother? Yes, yes, yes. Good, good, good. Behavior, I'm talking about lovingly, नहीं बेटा, loving, loving, respectful. Yes, he respected his brother. Yes, yes, he respected his brother. Or, okay. And sometimes he was upset also. He used to be upset also. Okay, so kind. Okay, okay, right. So I hope you have noted these qualities, all the things you have noted. Okay, 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 right. Good, good, very good, very good. Okay, now come to भैया's character. चलो, अब भैया के बारे में, because see here you are only mentioning there about them only, but you are recalling the whole chapter. पूरा chapter आप सोच रहे हो. So in a way you are revising your chapter also. हाँ जी बताइए. भैया की एज 14 years. वेरी गुड, वेरी गुड. हिज क्लास, yes, he was in ninth class. Ninth class, he was in ninth class. Yes, very good. Okay, what about his qualities? What about his qualities? अब सोचो, जैसे हमने मुन्ना की क्वालिटीज लिखी हैं. स्ट्रिक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, ओके. स्टूडियस, स्टडीज नहीं, स्टूडियस हम बोल सकते हैं. स्टूडियस कि जो हमेशा किताबें लेके बैठा रहता, पढ़ता रहता. ओके, ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी गुड. ही वॉज ब्यूटीफुल. यस, इफ यू रिमेंबर द लास्ट आंसर, वहां पे हमने बहुत कुछ लिखा था उसके बारे में. केयरिंग, वेरी गुड, वेरी गुड. ब्यूटीफुल, केयरिंग. लवली विद मुन्ना, लविंग, लविंग बेटा, लविंग. Now think about that part where he said that bookworm. Yes, very good. Bookworm, we can say. Very nice. When he said to his brother that you are my duty, you are my dash. What is that word? वो भी एक उसकी quality है. Starting with R. Think, think, think. देखा, दो चीजें हम रिवाइज कर रहे हैं. Munna was his dash. So what will be the right answer? Munna was his responsibility. तो उसके लिए क्या हम यहाँ पे, उसके लिए yes, it is responsible. Very good. Responsible, dutiful. Okay, now come to next point. जब वो अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है मुन्ना को, so what does that prove? What does that prove? जब वो अपने पेरेंट्स के, when he wants Munna to understand the value of that hard earned money that is earned by his father, so what does that show? He is dash towards his parents. क्या आएगा, क्या आएगा वहां पे? Starting with R. Again, starting with R. Beta, I am talking about that point. Yes, respectful with single L. Very good, very good. With single L, beta, respectful. Right? So ये three qualities होंगी. Okay, okay, stop, stop, stop. Now come to next point, his behavior towards his brother. His behavior towards his brother. Yes, beta, Munna became sad. ये क्या हो गया? You are not to give me answer of that thing. You are, yes, strict and kind. Okay, very good, very good. Loving also, loving also. He loved his brother very much. Okay,
सो आप सबने वेरी गुड, आप सबने बहुत अच्छी तरह से बेटा पार्टिसिपेट किया. इट मीन्स यू ऑल नो अबाउट द चैप्टर. ओके, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट थिंग. थैंक यू बेटा, वेरी गुड. ओके, नाउ आपने अपने पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, हमने सारे डिस्कस कर लिए. द पॉइंट्स विच आई थॉट. ओके, so let me show that. Okay, now if we are told to write biosketch of Bhaiya, okay, अब देखो, अब we are doing that on the basis of the chapter. So when we need to write about that biosketch of Bhaiya, so definitely कुछ तो introduce करेंगे ना कि भैया है क्या. Okay, so these are the points. So now you tell me what will you write. अब भैया का हमने लिखना है बायो स्केच. सो नाउ यू नीड टू राइट. व्हाट विल यू राइट हियर? टेल मी. डोमिनेट. यस, डोमिनेटिंग का मतलब वो ये उसको दिखाता था कि मैं तेरे से बड़ा हूं एंड ये तेरी ड्यूटी है, मेरा कहना मान. वो जिसको बोलते हैं ना घर में आप भी जहाँ पे बड़े हो, आपके बड़े भैया दीदी हैं, तो वो हमेशा कहते हैं ना, क्या है, मेरा कहना मानो, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है. वो होता है डोमिनेट करना, किसी पे अपना प्रभाव डालना, उसको बोलते हैं डोमिनेट करना. ओके, आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू यू. डोमिनेट का मतलब जानबूझ के मैंने लिखा. यू विल कम टू नो अबाउट अ न्यू वर्ड ऑल्सो. सो डोमिनेटिंग मीन्स वो हमेशा ये दिखाता था कि मैं बड़ा हूँ, इसलिए चाहे वो हमेशा फेल होता था और छोटा पास हो जाता था, even then he used to say कि नहीं, it is your duty to sit with the books, you should not go here and play. ये होता डोमिनेट करना, अपना रोब दिखाना. ओके, हाँ जी बेटा, अब बताइए मुझे इन पॉइंट्स को यूज करके हाउ विल यू स्टार्ट राइटिंग. व्हाट विल बी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द बायो स्केच. नाउ स्टार्ट टाइपिंग. नाउ स्टार्ट टाइपिंग. And Jivita, I hope the things are clear to you. So start typing. First sentence, you are to write bio sketch. Yes, I'm waiting for your response. Okay, waiting for your response. Okay, beta, you are not to write this. You are not to write this, बेटे. अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो अपने फोन से स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो. आपने जो बायो स्केच आपको कैसे लिखवाया था, ये सिर्फ मैंने हिंट्स दिए हैं. मैंने ये आपको सिर्फ हिंट्स दिए हैं. इन हिंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है पूरा. बेटा सुन लो गगन जी, सुन लो. बेटा ये तो मैंने भी लिख दिया, आपने क्या लिखना है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है. मैंने बोला है कि इन पॉइंट्स को आपने बेटे इलेबोरेट करना है, पूरा डिटेल में लिखना. दैट विल बी अ कंप्लीट बायो स्केच. So tell me what will be the first sentence of the bio sketch. First, I am talking about the first sentence. Yes, Bhaiya is the main character of the story My Elder Brother. पहली लाइन हम ये लिखेंगे, पहला सेंटेंस. In the chapter, the main character in the chapter का नाम भी लिख दो. In the chapter, My Elder Brother is Bhaiya. ओके, हमारे इंट्रोडक्शन तो होनी चाहिए, हम किसके बारे में लिख रहे हैं, कौन है वो. ओके, ही इज एल्डर टू. किससे बड़ा वो, किससे बड़ा है वो लिखना है. आई वॉन्ट दैट थिंग. यू शुड फ्रेम प्रॉपर वेरी गुड सेंटेंसेस. Bhaiya is the main character in chapter My Elder Brother. Okay, first sentence is done. It is right. It is right. Now come to the next sentence. How will you elaborate this point, elder brother? He is elder मुन्ना. वो बड़ा मुन्ना है. He is elder मुन्ना या मुन्ना से बड़ा है? बेटा पहले बेटा भैया is मुन्ना's elder brother. Okay. और अगर हमने preposition लगा के इस सेंटेंस को लिखना है, how will we write? He was, not was बेटा, is. अगर हम ये बायो स्केच सारा प्रेजेंट में बता रहे हैं ना, तो is से लिखेंगे. He is elder to मुन्ना. Very good. He is elder to मुन्ना. This is our second sentence. Okay. Now come to the age. Come to the next point, that is age. Yes.
Yes, Bhaiya is 14 years old. Very good, very good. His his studies, he studied. Oh, sorry, he studies in ninth class. Okay, very good, very good. Then he is responsible, dutiful, and respectful. Okay, अगर आप ऐसे ही, I think you should explain these points. कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल ड्यूटीफुल है, कैसे है, कुछ ना कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन करो. एंड इफ यू हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, क्वाइट पॉसिबल मैंने कोई पॉइंट नहीं लिखा हो, आप वो भी लिखो. सी ये बेटा बायोस्केच जो होता है ना, ये शॉर्ट कॉम्पोजिशन होती है. एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि इसमें हम जो इंफॉर्मेशन दी होती है वो प्लस दैट वी ऑलरेडी नो, हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें से कुछ अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपको कुछ और पता है, राइट इट डाउन. मतलब मैं एक बार मैं पढ़ूं तो मुझे पता चल जाए, अच्छा ये है कैरेक्टर, ये है मुन्ना के बारे में, सॉरी भैया ये है, उसमें ये क्वालिटीज है, वो इस तरह का पर्सन है. दैट शुड बी क्लियर. किसी का बायो स्केच पढ़ के उसकी पूरी पिक्चर हमारे सामने आ जानी चाहिए. हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ही इज ऑलवेज बिजी विद हिज बुक्स. हमने ये पढ़ा है ना. तो you are to add all those lines here in this bio sketch. This is what I want. बेटा ऐसे नहीं लिखना, his qualities are, he is responsible. You are not to write like this बच्चे, ऐसे नहीं लिखना. आप इसी का सेंटेंस थोड़ी बना दोगे, his qualities are, his behavior is loving caring. No. आपको बताना है कौन सी, आपको कहीं से पता चलता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, कैसे है, that you can elaborate. No problem with that. He always holds a book in his hand. Okay, very good. He is responsible, dutiful, respectful. Okay. और he likes to make drawing. No, no. ये तो मुन्ना करता था. ये तो मुन्ना करता था. अगर हम बिगिनिंग में देखें, वो तो लास्ट में जाके he admits this thing. वो तो लास्ट में जाके वो एडमिट करता है कि मेरे को भी खेलना, ड्राइंग करना पसंद है, मैं नहीं करता क्योंकि अगर मैं करूंगा तो तू भी करेगा. नहीं भैया, बेटा भैया लव टू स्टडी नहीं, लव्स टू स्टडी, लव्स. Okay, the age of भैया is 14 years old. He is elder brother of Munna. Okay, he is elder to Munna. Responsible. Okay, 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 okay. Good, good. Dominating. Okay, okay, ठीक है. He like, बेटा he likes to fly kites. Again, ये मुन्ना का है, मुन्ना करता है ये. हम यहाँ पे भैया के कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं. He is responsible for Munna. No. He thinks Munna is his responsibility. Responsible for Munna nahi. Bhaiya likes to play, but he studies all day. Okay, that we can write. That we can write. He towards the end, he admits that he lives in the hotel room नहीं बेटा, hostel है ये. वो hostel में रहते हैं. He is caring and dominating, loving. बेटा इस तरह से sentence नहीं हम frame करते. जब मोर देन 2, जब हमारे पास ऐसा कुछ क्वालिटीज होती हैं तो फर्स्ट के बाद कॉमा, सेकंड एंड लगा के थर्ड हम लिखते हैं. हॉस्टल स्पेलिंग चेक करो. ही इज अ ब्यूटीफुल. ओके ओके, चलो ठीक है, अब आपने लिख दिया सारा. ओके, यस, वेरी गुड. ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द हार्ड अर्न मनी ऑफ हिज फादर. वेरी गुड, वेरी गुड. He is respectful to his parents and he is responsible too. He takes the responsibility of Munna. Very good. Now I am getting good sentences. Good, good, good. Very good. Okay. So I have also tried to write something. Just read it out. Okay. Yes. अब इसको पढ़ो. अब now stop typing. Stop typing. Oh, very good. ये copy paste तो नहीं कर दिया? Okay. ओके ओके बेटे, ओके बेटे. अब इसको पढ़ो. अब इसको पढ़ो. इट इज भैया इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, माय एल्डर ब्रदर. ये होगी उसकी इंट्रोडक्शन. उसके बाद में ही इज एल्डर टू मुन्ना, वो मुन्ना से बड़ा है. ही इज 14 years old एंड स्टडीज इन 9th क्लास. जहां पे हम दो सेंटेंसेस को, दो पॉइंट्स को मिक्स कर सकते हैं, वी शुड, राइट. ही इज ऑलवेज बिजी विद हिज बुक्स. ही लव्स हिज यंगर ब्रदर एंड केयर्स फॉर हिम. ओके, अब लविंग केयरिंग का आ गया ना, उसको इस तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया. He thinks that Munna is his
responsibility. So he always guides him to study hard. आपके वाली ही बातें हैं, वही मैंने लिखा है, but in some other. So this is what I want you to write. Okay? He even scolds him to make him realize his mistake. वो कई बार भैया से, जब भैया स्ट्रिक्ट भी हो जाता है उसके साथ, उसको डांटता भी है. Okay? He also respects his parents' hard-earned money. And I like his role in this story. Munna is really very lucky to have Bhaiya as his elder brother. So I think in this way we can write. So you can take its screenshot. Young students, if they are interested, you can do that, right? So this is how beta कि जब भी आपको कोई कैरेक्टर स्केच आए, ये नहीं कि वर्ड टू वर्ड हम वैसे लिखते रहे. शो योर क्रिएटिविटी. दिस इज हाउ यू विल लर्न कि कैसे चीज़ों को लिखा जा सकता है. कुछ सेंटेंसेस को ट्विस्ट कर दो, कुछ भी कर दो, वट एवर यू नो अबाउट. हो सकता है मैंने कई पॉइंट्स भूल गई हूँ मैं, बट यू कैन ऐड दैट. सो दिस इज हाउ यू आर टू राइट दैट बायो स्केच. ओके, सो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा. सम स्टूडेंट्स दे मस्ट हैव टेकन दैट. वेरी गुड. सो बेटा जब भी बायो स्केच लिखना है, ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है. Okay, so today we have done two things. We have again revised the chapter My Elder Brother, because when we think about their characters, तो obviously वो सारे जो incidents है वो भी हम recall करते हैं. Okay, and secondly we have learned how to write a bio sketch. Okay, I hope the things are clear to you. So that's all from my side, beta. So thank you very much. I hope the things are clear. Now Param ma'am, yes, you will. You can start, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, Vijay. Yes, good morning, all of you. Yes, beta, by the time I'm going to share the screen, you will tell me what we have done in the last class. Okay, which chapter we are going to do. Same chapter we are going to do today again. Okay, but a few topics were revised on that day also. Now you will tell me which topic was revised. Okay. Write in the chat box. Yes, chapter 5, rocks and minerals. Very good. Again, we are going to perform some activities of this chapter. Clear? Can you name the rocks, type of rocks we have done on that day? Okay, very first type of rocks, which we call the original or the oldest rock. Ma'am, screen is not visible. It's not visible. Ma'am, the screen is not visible. Yes, ma'am. Your screen is not. Someone else has. Okay, ma'am, I'll stop and I'll share it again. Yes. No, I think it will take a few minutes. Okay, by the time, students, you will write a few types of igneous rocks. Okay, we have done igneous rocks on that day. Now you will write again, you will write a few types of igneous rocks. Yes, very good. Igneous rocks, very first type is granite. Very good. Okay, can you write one use of granite? Yes, you can write one use of granite. Granite. Yes, you are writing all 4 types of igneous rocks. Very good. Now you have to write one use of it. Yes, it is used for construction purposes. Very good. Okay. It is used for construction purposes because it is very hard and weather resistant, and we can use it for building purposes. Okay, इसके बाद आता है the next igneous rock is basalt. Write down. Yes, it is also used to make kitchen slabs. Very good. Next is basalt. Okay, what is the use of basalt? It is also used to make buildings, construction purposes. And next is pumice. What is special about pumice? Write it in the chat box. जल्दी से लिखो, ये
इसकी स्पेशल Ma'am, your प्रॉपर्टी क्या screen है? is visible now. Yes, beta. Now I'm coming to the point. It's okay now. Yes, pumice, it floats on water because it's very lightweight and it is also used for construction purposes, and it is used by dentists to make the teeth polishing powder. And the last one we have done on that day is obsidian. Clear? It is used as a cutting tool and it is also used in surgery. Now, next type of rocks we are going to do. These are, see this, okay, and watch it carefully. What's going on? Okay, the formation of sedimentary rocks is going on. Okay, sedimentary rocks are formed. Now, watch this, and you have to fill in the blanks. Look at the GIF, and you have to fill in the blanks also. First one is, due to erosion, igneous rocks break into small pieces, and what do we call these pieces? Now write down. First, fill in the blanks. Yes, very good. Sediments. Okay, so it is clear that sedimentary rocks are formed from igneous rocks. सबसे जो पुरानी है, जो सबसे पहले बनी है rocks, igneous rocks, and they are formed by cooling lava or magma. Okay, when it comes out of the earth's surface. So after when it rains, okay, winds are blowing, okay, due to these winds and water, due to wind and water, they are broken into small pieces, which is called weathering of rocks. Okay, rocks get eroded. Due to erosion, rocks break into small pieces. We call them sediments. Clear? And these sediments are carried by wind and water. Very good. And you all have to write in the chat box. Okay, participation is must. Whether right or wrong, you have to type it. Yes, very good. Second, sediments are carried by wind and water. और इस वीडियो में जो देख रहे हो आप, यहाँ पे वाटर के साथ सेडिमेंट्स आ रहे हैं. Clear? And third one is, new sediments pile up on the top of old one. Very good. जो पुराने सेडिमेंट्स एक बार सेटल हो जाते हैं, उसके ऊपर और सेडिमेंट्स की लेयर्स आती जाती हैं. जो पुराने वाले हैं वो नीचे दब जाते हैं. क्लियर? And fourth one is, the old layers become compressed. Okay, उनके ऊपर जो है प्रेशर पड़ जाता है ओल्ड लेयर्स के ऊपर. जो नई लेयर्स आके ऊपर गिर रही हैं, उनके प्रेशर के नीचे वो दब जाती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं. एंड डैश, कंप्रेस हो जाती हैं और क्या हो जाते हैं वो? दे बिकम हार्ड ड्यू टू द pressure of the upper layers, due to the pressure of the old or new sediments which fall over the top of the old one. Okay, जो न्यू लेयर्स हैं वो ऊपर आके गिरती हैं, तो नीचे जो है दब जाती हैं पुरानी लेयर्स, और वो इतनी नीचे चली जाती हैं. यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर हाई है, ऊपर प्रेशर भी पड़ रहा है न्यू सेडिमेंट्स का, तो दे गेट सीमेंटेड. कोई वहां पे मिस्त्री नहीं रहता, बट नेचुरली वो सीमेंटेड टुगेदर, एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं. दे फॉर्म द न्यू रॉक्स. वी कॉल देम सेडिमेंट्री रॉक्स. होप इट इज क्लियर टू यू. सो सेडिमेंट्री रॉक मीन्स जो रॉक सेडिमेंट्स से बनती हैं. सेडिमेंट्स मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, igneous rocks, which are formed due to erosion. Now next is, which rocks contain fossils? And what are fossils? Write it. Yes, but if doubt is there, you can write it in the chat box. And yes, sedimentary rocks. Very good. Okay, fossils are present in the sedimentary rocks. And what do you mean by fossils? फॉसिल्स को आप वन लाइन में कैसे बताओगे? व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स मीन्स, यस, who want to speak? Beta, you can write in the chat box, or after when this is over, okay, when this slideshow is over, then after that you can ask. Clear?
Traces of ancient plants and animals. Very good answer. Yes, sedimentary rocks contains fossils. जैसा अभी आपने देखा कि जो लेयर्स सेडिमेंट्स की जो लेयर्स हैं, एक लेयर आती है उसके ऊपर दूसरी लेयर आती है, तो समटाइम्स ड्यू टू सम रीजंस कुछ एनिमल्स बीच में दब जाती हैं. ओके, एक लेयर उसके ऊपर ड्यू टू समटाइम्स इट मे बी अर्थक्वेक. ओके, किसी और कारण एक लेयर के ऊपर एनिमल जो है डेड एनिमल और लिविंग ओके दब जाता है, उसके ऊपर और लेयर्स आ जाती हैं और सेडिमेंट्स आ जाते हैं. तो जो उन एनिमल्स के हार्ड पार्ट होते हैं उनके इम्प्रेशंस और यू कैन से मार्क्स, उनके चिन्ह वहाँ पे बन जाते हैं. ओके, दे लीव द इम्प्रेशंस ऑन दोज रॉक्स. वी कॉल देम fossils. So they are the traces of the ancient plants and animals. You can see one fossil of this animal. Hope it is a lizard, and its prints are there on the rock. Okay, fossils are obtained from rocks formed from ancient remains of plants and animals. Yes, very good. And these are very important for scientists. उनको study करते हैं. Okay, they can come to know okay before millions years okay these type of animals were there. उनकी वो पूरी स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं. ओके, रॉक्स की एज उनको पता चल जाती है, तो दे विल कम टू नो कि इतने साल पुराने टाइम पे, इतने साल पहले ये वाले एनिमल्स रहते थे. लाइक हमें पता है ना कि डायनासोर्स मिलियंस इयर्स एगो थे, तो उनकी क्या मिलती है, उनके फॉसिल्स मिल रहे हैं. So like asteroids come and kill all dinosaurs, so it press in the rock and it become fossils. Yes, it is correct. Okay, तो जो पुराने एनिमल समटाइम वो अब नहीं मिलते, तो वो उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती थी, we will come to know after studying the fossils. Now next, you have to recognize the rock. You have to name this rock, and related to that, you have to fill in this blank. This is basalt? No. Today we are talking about, I'm going to give you hint, we are doing these sedimentary rocks, and yes, it is shale. Very good. Okay, shale is it, and dash used to make bricks and cement. आपको इससे पता चल जाएगा कि it is made from mud. Okay, soft mud से बनती है, and it is compressed due to the sediments which जो उनके ऊपर सेडिमेंट्स ये नीचे दब जाती है, तो इट गेट सीमेंटेड टुगेदर. जो मड से बनती है, सॉफ्ट मड से बनती है, and it is a sedimentary rock. It is used to make bricks and cement. Next is, recognize this. Can you guess by looking at the color of this? Yes, all these sedimentary rocks, they are formed by deposition of the new sediments over the old one. पुराने sediments के ऊपर वो deposition means उनकी layers ऊपर settle हो जाती हैं. Yes, basalt? No, it's not basalt. It is, yes, sandstone. Okay, sandstone may be in many colors. So two buildings are there in Delhi. They are made up of red sandstone. Now you have to write these two names. जो दो buildings दिल्ली में हैं, they are red in color. They are made up of red sandstone. You have to write name of these buildings. Very good. It is Red Fort and Qutub Minar. Very good answer. Yes, Qutub Minar and Red Fort, they are made up of red sandstone. Clear? And red sandstone is also a sedimentary rock. Now look at this. Okay, by the color you can recognize. This is, yes, can you recognize without a hint? Very good. You are intelligent. Limestone, good. It is limestone and it is made up of sea animals. Clear? And sea animals के जो shells होते हैं उनमें mineral होता है, we call it calcite. Okay, calcite contain करता है limestone. So it is made from the sea animals, shells of the sea animals.
So limestone contains calcite. Now recognize this. This looks very beautiful also. Yes, look at this rock. Can you name? Yes, I'm waiting for your answer. Yes, conglomerate. Very good. Yes, very good. Okay, आपको इसकी स्ट्रक्चर से पता चल जाता है कि this is made when gravel, pebbles and stones get cemented together by minerals. Okay, अलग अलग कलर के स्टोन्स और उसमें छोटे छोटे पेबल्स हैं और ग्रेवल है, ये सब सीमेंटेड टुगेदर मीन्स मिनरल्स एट हाई टेम्परेचर प्रेशर, ये सब सीमेंटेड टुगेदर मीन्स ज्वाइन हो जाते हैं naturally and they form a very beautiful rock. We call it conglomerate. Clear beta? Yes, check the spelling also. Conglomerate नहीं बेटा, is conglomerate. Very good. Clear? It is coarse means ये smooth नहीं होता, even नहीं होता, it's uneven. Okay, ये भी इसकी पहचान होती है, थोड़ा ऊपर नीचे surface होता है इसका. Clear? Can you tell one use of conglomerate? Okay, where do we use conglomerate? It is used in construction purposes. Very good. Yes. Now next, all answers are there. First is shale used to make bricks and cement. Second, Red Fort and Qutub Minar. They are the buildings present in Delhi which are made up of red sandstone, and limestone contains calcite which is present in the which is formed by shells of sea animals. And dash conglomerate, it is formed when gravel, pebbles, they cement together. Now look at this. Okay, which type of rocks are formed? Write it. Which type of rocks are going to formed by heat and pressure? These are metamorphic rocks. So अभी आपने जो सेडिमेंट्री रॉक्स की हैं वो भी इग्नियस रॉक से बनी थी, और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन रही हैं ये भी ड्यू टू हीट एंड प्रेशर. ओके, जो पुरानी रॉक्स होती हैं व्हेन दे रीच वेयर. यस बेटा. मैम जो मेटाफोर के स्पेलिंग में उसमें डबल ही आता है. नो बेटा, सिंगल. थैंक यू मैम. Yes beta, look at this, watch it carefully. There is formation of metamorphic rocks. Okay, जब sedimentary rocks, igneous rocks, they reach a place where there is very high temperature and pressure. ऊपर से बहुत सारी layers आ जाती हैं, बहुत pressure पड़ता है नीचे, और they reach the place under the earth crust where there is very high temperature. नीचे से बहुत टेम्परेचर हाई आ रहा है, देखो ऊपर को हीट आ रही है, और ऊपर जो लेयर्स हैं उनका प्रेशर पड़ रहा है, तो जो पुरानी लेयर्स रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स, वो कंप्रेस हो रही हैं ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती हैं, एंड दे फॉर्म अ न्यू रॉक, न्यू टाइप ऑफ रॉक, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक. तो मेटामॉर्फिक रॉक वो किससे बनती है? ओरिजिनली वो एक्चुअली क्या होती हैं, जहाँ तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जहाँ इग्नियस रॉक्स होती हैं. तो इन दीज कंडीशंस एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वो किस में चेंज हो जाती है बेटा? मेटामॉर्फिक रॉक्स में. ओके, जो एग्जिस्टिंग रॉक्स है उन्हीं की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं. और एक आपको जो नेम भी सामने आ रहा है, दिस इज स्लेट. सो स्लेट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक. नाउ you have to recognize this rock, and again the same way you have to fill in the blanks. Okay, which type of rock is this? Marble. Very good. And it is formed from limestone. Limestone, sedimentary rock. Sedimentary rock at very high temperature and pressure, it gets compressed and it forms marble. Okay, marble
maybe in many colors. Okay, white marble से एक building बनी हुई है which is famous. India की पहचान है वो building. Can you name that? Which is made up of white marble? Taj Mahal. Very good. Okay, Taj Mahal in Agra is made up of white marble. Now look at this. Can you recognize this rock? Yes, good. You all have to write, but all are not participating. Write on this rock. This marble is okay. Okay, now next rock is, yes. Next rock, is it? Yes, it is. Yes, very good. It's quartzite. Okay, quartzite is this, and it is formed from sandstone. ये sandstone से बनती है. अब आपको एक hint मिल गया है, तो you can write its name easily. It is formed from sandstone and it is used in glass industry. Okay, glass industries में use होती है. It varies in colors. Okay, it may be gray, purple, or even green in color. Clear? So it is quartzite. And it is a metamorphic rock. Yes, beta, these are the newest, you can say. Quartzite is made up of sandstone. When sandstone gets compressed, तो वो compress हो जाता है at high temperature and pressure, तो कौन सी rock बनती है? Metamorphic rock. Which one? Quartzite. Clear? So look at this. What is this? Yes, beta, this is very good, slate. Okay, slate is formed from, can you write? Slate किसको compress करने से बनती है? Shale. Very good. Okay, it means you know. Shale when gets compressed, तो new जो rock बनती है, that we call slate. Clear? And what is the use of slate? It is formed from soft shale and it is used for making slates and blackboards, chalkboards. Chalkboard आप use करती हो, that is made up of slate. And जो chalk use करती हो, वो भी एक limestone, sorry, chalk you use करती हो, वो भी एक form है किसी rock की. Can you write that? Yes, beta. Shale slate is used as, very good, limestone की एक form है chalk, और जो board है it is also a type of rock, that is slate. Slate को हम कहीं और भी use करते हैं. Can you tell? Slates को हम constructions में use करते हैं. What can be made from the, very good, roof. It's not roof, it's roof. ROOF. Very good. Okay, roofs भी बनती हैं slates की. Clear? And next, look at this. Okay, जो आपको इसमें दिख रही हैं, थोड़ा पैरेलल बैंड्स दिख रहे हैं, उससे आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो. आपको पैरेलल बैंड्स दिख रहे हैं ना, आपको ब्लैकिश से वाइट के ऊपर. यस, वेरी गुड, इट इज नाइस. ओके, जी से स्टार्ट होता है बट जी इज साइलेंट, यू हैव टू से नाइस. एंड कैन यू टेल फ्रॉम विच रॉक इट इज मेड अप ऑफ? किस रॉक से ये बनती है, कि कौन सी रॉक कंप्रेस होती है? वेरी गुड, ग्रेनाइट. मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जी से ग्रेनाइट और जी से ही ये स्टार्ट होती है. नाइस. सो इट इज फॉर्म्ड बाय compressing the granite. When granite gets compressed at high temperature and pressure, granite is a igneous rocks. Clear? So these metamorphic rocks, they may be made from igneous rocks or they may be made from sedimentary rocks. Very good. Now this is metamorphic rock formed from granite. Slate is soft. Yes, it is soft. Slate टूट भी जाती है. Clear? Soft shale से बनती है वो. Clear? Now see the answers. First one is marble, and marble is formed from limestone. Limestone से बनता है. And second, quartzite is formed from sandstone and is used in glass industry.
And next is slate. Slate is formed from soft shale and is used for making slates and blackboards. और roofing के लिए भी use करते हैं for construction purposes also. Now dash is a metamorphic rock formed from granite. So gneiss is the metamorphic rock which is formed from granite. Clear? And this is all about, and now you can ask me if any query is there. Okay, you can write in the chat box if you want to say something, you want to ask something regarding this chapter, the types of rocks we have done. Okay, all the 3 types of rocks. Yes, meaning of Ma'am, your screen is not visible.